allocated funds to GHMC in the last 3 years, 2014 and 15, the government has allocated rupees 376 crores for GHMC in the state budget, but released only 259 crores. In 2015 and 16, 58 crores were released against budgetary allocation of rupees 378 crores in the current year, 2016-17 rupees. Only rupees 69 crores were provided for GHMC in the state budget, but nothing has been released so far. With hardly a fortnight left, the closure of financial year, so the GHMC has achieved the distinction with higher ever collections of property tax. Finance Minister Saab note kar rahe sahab. This is very important point, sir. So GHMC has achieved a distinction with its higher ever collection of property tax in demonetized currency note among all the municipal corporations in the country in November 2016. The collection works out to rupees 206 crores and the money was deposited with the government. However, sir, I might be wrong. I need a clarification from the Finance Minister, sir. However, I am told that no funds have been released to GHMC in lieu of demonetized note deposited with the government. Is it right or wrong, sir? If it is, I think it is very unfair, sir. पैसे GHMC प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जमा करी, उसके बाद बोला गया कि सरकारी खजाने में इसको डाला जाए. सारा पैसा सरकारी खजाने में डाला गया, उसके बाद आज तक भी GHMC को नहीं दिया गया. सही है या गलत है? अगर गलत है, पूरे म्युनिसिपालिटी से हुआ है बोल रहे हैं जीवन रेड्डी साहब मुझे. अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है साहब. दिस इज रियली अनफेयर. और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पैसा जल्द अज जल्द वापस दे दिया जाए, जल्द अज जल्द. सर, आई मे रिकॉल that 73rd constitutional amendment makes it mandatory for a state government to appoint. This is a very important point, sir. Mandatory for a state government to appoint a state finance commission every 5 years to review the financial position of Panchayat Raj institutes and urban local bodies under Article 2431. And why? Please conclude. नहीं सर, अभी आधा घंटा है साहब. अभी नहीं रिक्वेस्ट है साहब, आधा घंटा है साहब. 10 minutes. Sir, and make recommendation to the devolution of state taxes to these local bodies, sir. So, the determination of taxes which may be assigned to these local bodies and the quantum of grant in aid these bodies from the consolidated fund of the state, I request the government to constitute the first finance commission of Telangana state as mandated by the constitution amendments, sir. So, the Hyderabad GHMC and HMDA areas contribute bulk of state revenues and the GSDP, and this money goes for the development of the entire state. But the Hyderabad has not been getting its due share of state taxes, revenues for provision or upgradation of civic amenities. The State Finance Commission can look into these issues and make recommendation for devolution of higher quantum of state taxes, including VAT and motor vehicle taxes, sir. Sir, another issue is the burden placed on the GHMC for bearing the losses incurred by the Telangana State RTC on the city services in Hyderabad. GHMC was forced to make payment for this purpose in 2015 and 16. And the first half of the 2016-17, this has seriously affected the GHMC finances and left meager fund for its own capital expenditures. So GHMC mayor has already written to the government that the GHMC is not in a position to bear the city losses for TSRTC in view of its own precarious financial status. So GHMC has directed through a cabinet resolution, this diktat has to be reversed only through another cabinet resolution. I hope the Chief Minister Saab would look into this issue, sir. Sir, I request the government to step up the allocations for the Kuri Kutub Shah Urban Development Authority, which gets rupees 6.5 crores in the state budget of 2017-18. Work of Charminar pedestrianization needs to be expedited, sir. Sir, I would request the government to take up the works of metro rail project in whole city area, and our party would extend all support to take up the metro rail project, sir. I request that the government work on MMTS phase 2 should also be completed, sir. Sir, I would recall that in October 2006, the then Chief Minister, Mr. Rajshekar Reddy Saab, had announced 2,000 crores package for the development of old cities, sir. Sir, वो पैकेज 2,000 करोड़ का दिया गया था. थोड़ा सा काम हुआ, बहुत सारे काम वैसे ही रुके हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए. सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा और दरखास्त करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 5,000 करोड़ का पैकेज अगर आप ऐलान करेंगे तो पुराने शहर में और तरक्की आएगी, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पुराना शहर
नेग्लेक्टेड शहर है साहब कि हर वक्त उसको नेग्लेक्ट किया गया है. वहां के लोग भी चाहते हैं कि वहां पे तरक्की आए, वहां पर भी काम हो, रोजगार के मौके मिले. हम उम्मीद करते हैं कि आप ये काम हमारे इस मुतालबे पर जरूर करेंगे. मैं और एक बात आपसे ये भी कहूंगा सर कि जीएचएमसी एरिया को उस्मान सागर, हिमायत सागर, सिंगूर और मांजरा से पानी दिया जाता था, लेकिन आज वो पानी की सप्लाई को रोक दिया गया. ओल्ड सिटी में ज्यादातर सप्लाई गंडीपेट के पानी से है. खैर जो भी वजह है आप रोक रहे हैं. मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम इस गरमाई सीजन के लिए, इस गरमाई सीजन के लिए गंडीपेट से पानी अगर आप देंगे तो काफी पुराने शहर के लोगों को इससे फायदा होगा. और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के अतराफ जितनी आबादियां हैं उनको पानी पिलाने का प्रोग्राम बनाया है और पानी पिला रहे हैं. लेकिन आज पुराने शहर के लोगों में भी और पुराने शहर के कई एरियाज में अनसर्व्ड एरिया है, वहां पर भी करने के लिए. और हर साल यह होता था कि समर कंटिजेंसी प्लान या एक्शन प्लान के नाम पर एक 25 या 50 करोड़ रुपए शहर के पानी के मसाइल को टैकल करने के लिए समझ में दिए जाते थे. मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत इस साल भी देगी. अगर नहीं दे रहे हैं तो मिनिस्टर साहब के पास एमएलएस के 2-2 करोड़ रुपए जो मिनिस्टर के इख्तियारात में रहते हैं वो पैसे समर प्लान, एक्शन प्लान के लिए दे दिए तो कम से कम समर में एक एक्शन प्लान का काम होगा. फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मिनिस्टर साहब के इख्तियार में जो फंड है, हमारे होम मिनिस्टर साहब हमारे इस शहर के मिनिस्टर इंचार्ज अब तक वो पैसे रिलीज नहीं करे. मैं दरखास्त करूंगा कि आप वो पैसे के जरिए समर एक्शन प्लान को अगर देंगे तो इससे काफी काम होगा सर. पावर और डिस्कॉम में सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सर कि हाईवेज के बारे में भी कहना चाह रहा था, वक्त नहीं है सर तो मैं उसको स्किप करता हूं सर. आई थिंक द टोटल प्रोविजन ऑफ 5,034 crores फॉर द रोड सेक्टर इज नॉट enough sir, and this can be raised during the year to take up due to the efforts of the Telangana government. The length of national highway in the state has more than doubled in the last 3 years sir. मैं मुबारकबाद देता हूं इसके लिए हुकूमत को. और पावर एंड डिस्कॉम sir, the time of our Telangana state power sector was in a critical situation with the long spells of power cuts. मैं ये कहूंगा कि हुकूमत ने पावर के मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है. मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं. लोगों ने तो यहां तक कहा था कि नई रियासत बनेगी तो अंधेरे में डूबी रहेगी, डार्क रहेगा, कैसा पावर देंगे. लेकिन चंद्रशेखर राव साहब की हुकूमत ने बता दिया कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे पास आज पावर का कोई शॉर्टेज नहीं है सर. एंड एट द सेम टाइम सर मैं ये भी कहूंगा कि डिस्कॉम्स आर प्रोवाइडिंग 9-hour पावर सप्लाई टू एग्रीकल्चर sector pump sets sir. The power generation capacity has been augmented by additional 4,190 megawatts in the last 3 years. By the year 2020 the total power generation capacity is poised to go up to 16,306 megawatts as against only 6,574 megawatt capacity in June 2014 sir. ये बहुत बड़ी कामयाबी है sir. Sir, I would like to point out here that despite adequate availability of power supply in the state, हमारे पुराने शहर में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं साहब. बगैर बोले के पावर बंद होते जाता है सर. तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप पुराने शहर के जो पावर कट्स हो रहे हैं इस पर तवज्जो दें और मालूम करें कि क्यों इतना ज्यादा पावर कट हो रहा है. मुसलसिल पावर कट हो रहा है साहब. औहदेदार कहते हैं कि पावर कट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पावर कट बहुत हो रहा है सर. So TSI Pass, the Finance Minister Saab is updated over the fact that Telangana has been ranked first in the ease of doing business. The new industrial policy, TSI Pass, has been able to attract 3,451 companies with an investment of 58,341 crores and employment potential of 2.2 lakh persons. However, industrial sickness has been a severe problem in the state as it leads to unemployment and loss of revenues to the state. Sir, as per Telangana State Bankers Committee report, Telangana State 2016 and 17, there are 8,618 sick units in the state. What is worse, 80% of the total sick units have been declared as non-viable and only 7% are considered as potential viable. This is a very dangerous figures. Sir, efforts must be made to check the spread of industrial sickness and strengthen the MSME, micro, small and medium enterprises sector, which creates jobs for the youth. Sir, I would like to know the impact of investor-friendly policies for promotion of IT industries and electronic sector with IT export of rupees
75,050 crore from the last state last year, sir. Hyderabad still lags behind. Bengaluru IT companies have provided employment to 4 lakh people, and in this number can be doubled if we are able to attract more and more IT and IT-enabled services companies from India and abroad to set up, expand their operations here, sir. So now, an important subject which I would like to bring is the education, sir. Sir, when I congratulate the government in the power sector, in other sectors, for their achievements, I would like to say, sir, education is being neglected. Why? Why is the government not focusing on education? So the expenditure of education in 2016 and 17 was 8.2%, sir. Sir, now in the year 2017, the expenditure on education is 8.4% only. Why is it, sir? Why is it that the allocation is going down in the field of education? This is a question which needs to be answered, sir. For the education sector, the finance ministers have allocated 12,706 crores. Apart from this allocation, expenditure on education is also being incurred by other departments. According to the Social Economic Outlook 2017, the total number of schools is 41,337, include 28,830 schools run by state government and the local bodies. Total enrollment in school was 60.63 lakhs, sir, including 27.16 lakhs for or 45% in government and local body schools, sir. Sir, only 45% of students are enrolled in 70% of schools run by the state government and the local bodies. The private aided and unaided schools comprising 30% of institution account for 55% of enrollment. Similarly, 55% of teachers are in government and local body schools and 45% in private schools. This means that something is amiss in the government and local body run school. With less number of schools and teachers, the government and local body schools are having lesser retention rates and higher dropout rates of students, sir. So the infrastructure facilities in the government and local body schools are inadequate, sir. Sir, in many respects, with a significant proportion of the budgetary allocation and mark for the salaries, allowance and pension of the staff for the maintenance of the schools, meager funds are allocated. The schools under the Zilla and Mandal Praja Parishads are in very bad shape, and they get the grants in aid only towards salaries of the teachers and non-teaching staff, and no maintenance grants are provided to them. The end result is that students are leaving these schools, body schools, and joining private schools, sir. So there are large number of vacancies of teachers in government schools. Recently, the Telangana State Public Service Commission issued a notification for recruitment of teachers for SC, ST, BCs and minority education institution. The vacancy include 4,362 posts of trained graduates, teachers and 921 postgraduate teachers. The Chief Minister has relaxed the eligible criteria from 60% to 50% marks to enable more candidates to apply. For the trained graduate teachers, another eligible condition was that the applicant should have passed teachers eligibility test, sir. Sir, through you I would like to bring to the notice of Honorable Education Minister, sir. Sir, however, this condition is unnecessary. As per the NCERT rules, TET is compulsory as 20% weightage can be given to the applicants. 20% weightage can be given to the applicants who have passed TET. The TSPSC has scrapped this notification. Why have we scrapped this notification? Sir, TET पास करना वीकर सेक्शन और ये माइनॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल है. आप वेटेज का जो प्रोविजन है और नोटिफिकेशन को जो स्क्रैप करें उसको फिर से दोबारा बहाल करिएगा, उसको फिर से लाइए. I request the Honorable Chief Minister to enter the recruitment of teachers for the residential schools. 5 minutes conclude. No, sir, please, sir. Sir, I've done the preparation, sir. I'm not criticizing. I'm very much on the subject, sir. I request, sir, just give me, sir, more 20 minutes, sir. Sir, please, sir. Within 10 minutes, please. Sir, more 20 minutes, sir. Sir, मैं ये बोलूंगा साहब कि इसमें recruitment of teachers for the residential schools and other government schools to the district selection committee instead of TSPC. Any graduates with 50% mark should be allowed to apply, and 20% weightage for TET can be provided as per NCERT norm for filling up the vacancies of Urdu teachers, and separate DSC should be constituted, sir. Sir, separate DSC करेंगे बोलकर
चीफ मिनिस्टर साहब उर्दू के लिए इस ऐवान में बोले थे, वादा करे थे, और उर्दू के मखलूआ जायदादों को पुर करने की बात करे थे, और ये बोले थे कि डीएससी में मैंने उनको बताया था कि सेपरेट डीएससी कैसा, अगर सेपरेट डीएससी कैसे करना है, आप 3-3 महीने को नोटिफिकेशन देते जाइए, जो 3 बार अगर आप देंगे उसके बाद वो ओपन हो जा सकता है। तो मैंने समझाया था, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के करिए। आज तक भी वो मीटिंग नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब वो मीटिंग करेंगे और वो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है इसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है साहब, स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा मसला है और बिलखुसूस उर्दू का बहुत बड़ा मसला है सर। सर मैं ये भी कहूंगा कि schools do not have proper infrastructure. I request the government to allocate more fund for school education department for construction of additional classrooms and toilets and provision of furniture, sir. Sir, my party welcome ये जो आप residential schools जो खोल रहे हैं minorities के लिए, SC STs के लिए और उसको बढ़ा रहे हैं, हम वेलकम करते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स के ऊपर आप तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आप दूसरे जो गवर्नमेंट के मदारस हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स दो स्कूल्स एंड दो स्कूल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं और एक बात, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहां पे है, मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट को अपग्रेड करने के लिए फैसिलिटीज ऑफ ऑल government junior colleges, degree colleges, polytechnic colleges, so that they are able to offer intermediate degree technical education on par with well-known private colleges. There is urgent need to fill up the vacancies of junior lecturers and lecturers in government junior and degree colleges so as to improve the results of these institutions, sir. Sir, मैं ये भी आपसे कहूंगा सर कि ये जितने डिग्री और जूनियर कॉलेजेस में सर ये दूर दूर से लोग आते हैं। If I am wrong, I may be corrected, sir. Sir, schools are in the local villages, but the junior colleges and degree colleges are far away and many students come from a distance, बहुत दूर से आते हैं। तो मैं हुकूमत से कहूंगा आप इतनी फराख दिली के साथ सबको दे रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में भी आप खाने का इंतजाम कर दीजिए, लंच का इंतजाम कर दीजिए, जिससे कि मैं समझता हूं कि अटेंडेंस जरूर इंप्रूव होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड आई ऑल्सो नो दैट कि दिस वॉज also considered by the government. Kindly implement this. Give a meal, give them a lunch, so that कि जितने absentees हैं वो absentees को हम दोबारा वापस ला सकते हैं। Sir, I compliment the Chief Minister Saab for allocating ₹200 crores for organizing a centenary celebration for Osmania University and for construction of centenary blocks, sir. I am grateful to the CM साहब। मैं बहुत पहले ये मसले को उठाया था। एक बहुत बड़ा मसला है सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को दरखास्त करूंगा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों में उर्दू के वर्ड्स थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों में उर्दू के वर्ड्स थे, उसको निकाल दिया गया। अरे 100 साल हो रहे हैं साहब, कम से कम वो लोगों में उर्दू के वर्ड को आप बहाल कर दीजिए। बहुत बड़ा खुश होंगे लोग। वो उर्दू के लोगों को निकाल दिए। हमारे नए नरसिम्हा रेड्डी साहब है, वो भी जानते होंगे कि उर्दू का लोगो था साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, उसको निकाल दिया गया। फिर से डाल दीजिए। आप उर्दू के चाहने वालों की हुकूमत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पर भी तवज्जो देंगे सर। सर कमिंग ऑन टू द हेल्थ सेक्टर सर हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन 2016 एंड 17 वाज 4% और फिर 2017-18 में अगेन अभी भी सिर्फ 4% है सर। As the percentage of total expenditure, the allocation for the health sector in Telangana budget is lower than the allocation of neighboring state of AP, Kerala, Karnataka and Madhya Pradesh sir। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको और ज्यादा एलोकेट करेंगे। अभी एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें कई हमारे अराकीन ने सारे मसाइल उठाए, गांधी हॉस्पिटल के बारे में, उस्मानिया के बारे में, नीलोफर के बारे में, चेस्ट हॉस्पिटल, मेटर्निटी हॉस्पिटल, पेटलापुर, सुल्तान बाजार और ये जितने दवाखाने हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि उस्मानिया हॉस्पिटल कब बनेगा? व्हेन आर वी गोइंग टू टेक अप द रेनोवेशन ऑफ उस्मानिया हॉस्पिटल? द बिल्डिंग इज इन डिलैपिलेटेड कंडीशन, गिर रही है। काफी गरीबों को उस दवाखाने में इलाज करने से वो महरूम हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी करेंगे। द गवर्नमेंट इज अवेलिंग फंड्स, लोन्स ले रहे हैं बाहर से। मैं हुकूमत से अपील करूंगा और कहूंगा कि शायद मैं पहला रुकन हूं जो कह रहा है कि लोन्स लीजिए और शहर में और नए 3 या 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाइए। जरूरत है, आज बहुत बीमार लोग परेशान हैं। मेरे एरिया में बारकस हॉस्पिटल है सर,
اس کے لیے بھی بار بار ہم مطالبہ کرتے ہیں کچھ فنڈز دیجئے اس دواخانے کو اٹھانے کے لیے. اور ملک پیٹ کانسٹیٹوئنسی میں چیسٹ ہاسپٹل ہے چھوٹا, اس کے لیے کہتے ہیں, ہومیوپیتھی کے لیے. سر دیر از اے لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ اینڈ ریکویسٹ. آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب مسٹر محمود علی صاحب مائٹ بی نوئنگ سر اباؤٹ دس چار مینار ہاسپٹل. سر چار مینار یونانی دواخانے میں آیورویدک ہاسپٹل ہے. ہم آیورویدک ہاسپٹل کے خلاف نہیں ہیں, آیورویدک ہاسپٹل بھی پرانے شہر میں ہی رہنا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ملک پیٹ میں بلالہ صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں وہاں پہ ایک چیسٹ ہاسپٹل ہے, وہاں ٹی بی ہاسپٹل ہے, اس کے بازو بہت کھلی زمین ہے, وہاں پر ایک نئی بلڈنگ بنا کے آیورویدک کو دے دیجئے. اور چار مینار دواخانے کی پرانی عمارت کا تحفظ کرتے ہوئے یونانی میڈیسن کی جو تعلیم ہے اس کو بچانا ہوگا. یہ بہت آج یونانی تعلیم اتنی بڑی ہے لیکن آج اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا اور راجندر صاحب سے کہوں گا کہ چار مینار دواخانے کے لیے آپ 1-2 کروڑ روپے منظور کریے تاکہ ہم اس بلڈنگ کو, اس خوبصورت بلڈنگ کو بچا سکیں. وہ آج بلڈنگ گر رہی ہے, نئے بلاک کے لیے ہے. سر لاسٹ 5 منٹ سر پلیز سر پلیز سر آئی ایم ریکویسٹنگ سر. آپ جتنا پوچھے اتنا ٹائم دیے, 5 منٹ. سر آپ اتنا ہی ٹائم دیجئے صاحب جتنا میرے ساتھی کو دیے تھے, اتنا ہی دیجئے. میں ایک منٹ بڑھ کے نہیں بولوں گا سر. آپ دیکھ لیجئے سر کتنا ٹائم دیے تھے میرے ساتھی کو, اتنا ہی دیجئے. سر ہریتارن پروگرام میں سر بات کر رہے 5 منٹ. سر آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو ٹیک کیئر آف ٹو انشور دیٹ 40 crore seedlings to be distributed and planted next year are properly looked after. اس واسطے سر ہریارا یہ جو پروگرام تھا ہریتارن کے نام پر کئی جھاڑیں لگائے. کتنے جھاڑ زندہ ہے صاحب آج, ان کو جب تک پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. سو پروموشن آف ٹورزم کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا سر کہ حیدرآباد میں کئی درگاہیں ہیں اور درگاہوں کو آ کر درگاہوں میں زیارت کرنے کے لیے ایک ٹورزم کا پیکج بنائیے. درگاہ یوسفین رکھیے, اس میں حسین شاہ والی رکھیے, جہانگیر پیرا کی درگاہ رکھیے, بڑے پہاڑ کی رکھیے. میں امید کرتا ہوں کہ مولا علی کو رکھیے, جو شرائن ہے مکہ مسجد کو رکھیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کریں گے. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا سب کہ قلی قطب شاہ ٹومز کے لیے آغا خان ٹرسٹ کلچر جو کام کر رہا ہے وہاں پہ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ٹومز کو پھر سے ریوائیو کر رہے ہیں, اس کی خوبصورتی کو. اس کے سامنے کی زمین ہے ڈیفنس کی, وہ زمین کو لے کر اس کو اور ڈیولپ کرنا ہے ہم کو. اس کے لیے بھی میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اس تعلق سے بھی دیکھیں صاحب. ہوم ڈپارٹمنٹ سے سر the finance minister has been liberal in allocating 4,828 crores for the home department including police and jail administration sir. سر میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے ہمارے پاس, ساری چیزیں ہیں اور کافی کام ہو رہا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ غریب چھوٹے ڈبے والوں کو ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے. خیرتآباد اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں چھوٹے آٹو موبائل کے کاروبار کرنے والے, موٹر سائیکل کے کاروبار کرنے والے کنکوٹی کے پاس آگے وہاں پر کے جو گاڑیاں رکھتے ہیں باہر, ان کو 10-10 ہزار 12-12 ہزار کا چالان کر دیا گیا. اور پھر اگر کوئی روڈ پر فٹ پاتھ پر کاروبار کر رہا ہے اس کو جیل کو بھیج دیا جا رہا ہے 3 دن کے لیے. ایسا مت کریے. میں عمر منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ صاحب یہ جو چالانات کرے ہیں 10-12 ہزار کے, کہ انہوں نے فٹ پاتھ پہ گاڑیاں رکھی تھیں, ان پر جو چالان کیے ہیں اس چالان کو آپ منیمم کریے, ایک وارننگ دیجئے ان کو, بولی کہ آئندہ کریں گے تو ہم پھر بڑی کارروائی کریں گے, ایک موقع دیجئے ان کو. اس سلسلے میں سی ایم صاحب سے بات کیے, جلدی سے جلدی اسمبلی چل رہے ٹائم میں یہ سٹی کے ایم ایل ایز کے ساتھ ٹریفک پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے, وہ سب بند کرنے کا آلریڈی اور کمشنر کو بول چکے ہیں, اب بند ہوگا. صاحب وہاں پر جو موٹر سائیکل رکھتے ہیں صاحب کنکوٹی میں 12-12 ہزار 15-15 ہزار بول رہے جیل میں ڈال دیں گے صاحب. ان کو ایک موقع دیجئے, چالان ضرور کریے, منیمم چالان کر کے موقع دیجئے. اس کے بعد اف دے ریپیٹ دا سیم تھنگ, جب آپ ان کو پھر جتنا بڑا چالان کرنا ہے کریں. میری آپ سے یہ درخواست ہے صاحب, ایک موقع دے دیجیے صاحب, ایک موقع دے دیجیے صاحب ان کو. 15-15 ہزار 20-20 ہزار کا چالان دے رہے غریب لوگ ہیں صاحب. یہ ڈی مانیٹائزیشن کے بعد کافی لوگ پریشان ہیں صاحب. تھوڑا سا ہمدردی کریے, آپ کی حکومت بڑی ہمدرد ہے, ہر ایک سے ہمدردی کرتی ہے, ذرا ان کے ساتھ بھی ہمدردی کر کے ان کو بھی ایک موقع دیجیے سر. سر میں ایس سی ایس ٹی کے تعلق سے بھی کہوں گا سر کہ پورا فنڈز ایلوکیٹ کیا گیا لیکن خرچ نہیں ہو رہا ہے. لیکن حکومت نے اور چیف منسٹر صاحب نے تیقن دیا ہے کہ ایک بل لائیں گے اور وہ بل کو پاس کرنے میں ہم ہماری پارٹی کی طرف سے بھی پورا تعاون کریں گے. ایس سی ایس ٹیز کو ان کا حق دیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں
कि I would urge the Honorable Chief Minister Saab to declare the birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule on 11th of April as a state holiday on the lines of the state holiday on the birth anniversary of Babu Jagjeevan Ram and B.R. Ambedkar on 5th and 14th of 5th and 14th of April respectively every year, sir. क्योंकि ये भी बहुत बड़े एक लीडर थे साहब, ये महात्मा जो ज्योतिबा फूले, तो इनके भी पैदाइश पर और उसके साथ ही साथ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी पर जो पैसे 51,000 से 75,116 हुकूमत ने की है, मैं अपनी जानिब से हुकूमत का इस्तेकबाल, हुकूमत के इस फैसले का खैर मुकदम करता हूं। और ये 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन को जो केटीआर साहब के नाम से जो किट दिया जा रहा है, ये भी केसीआर साहब के नाम से जो किट दिया जा रहा है, मैं इसका भी खैर मुकदम करता हूं सर। सर, अबाउट दिस आरटीएफ और एमटीएफ के ताल्लुक से मैं कहना चाह रहा हूं सर। सर, ये वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज का ये जो मसला है, ये जो आरटीएफ का और एमटीएफ का reimbursement post matric scholarship by SC, STs and BC minority disabled and EBC students, sir, I would request the finance minister Saab to fulfill the CM Saab assurance and release all the pending arrears of RTF and MTF for the previous year and current financial year before March 31, sir. So for the next financial year, the RTF shall be released the same year and the MTF should be paid every month instead of one-time lump sum payment so that the students do not face any hardship, sir. So the amount proposed for fee reimbursement is 1,950 crores next year, sir. Sir, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब ये SC, ST और माइनॉरिटी के साथ ये करेंगे। और एक सर बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम कंक्लूडिंग सर, मैं एक 5 मिनट में खत्म करता हूं सर। सर, ये टू बेडरूम के स्कीम के बारे में भी कहूंगा सर, काफी तफसीलात है, लेकिन सिर्फ मुख्तसरन यही कहूंगा कि 2 बेडरूम के लिए अवाम बेचैन है और चाहती है कि 2 बेडरूम के रिहायश उनको मिले और कोशिश कर रहे हैं कि और उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत उनको जरूर देगी। लेकिन अगर बजट एलोकेशन हम देखते हैं तो बजट एलोकेशन इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत ये 2 बेडरूम के मसले को सीरियसली लेगी सर। और आखिर में सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि माइनॉरिटी के एलोकेशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट से लेकर आज तक बढ़ते गए हैं, लेकिन इस मर्तबा ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा माइनॉरिटी एलोकेशन का बजट कम हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी मैं ये कहूंगा कि ये टीएस प्राइड मेंट फॉर दलित है, वो उसी खुतूत पर माइनॉरिटीज के लिए भी हुकूमत को चाहिए कि टीएस प्राइड की तरह माइनॉरिटीज के लिए भी करे काम और वो सारे सहूलतें दें ताकि मुसलमान भी सनत में आ सके, कुछ काम कर सकें। और I would like to also point out here the need of release of all the allocated amount of finance department and spending the release amount by the minority welfare. Sir, I have highlighted this issue during the winter session of Assembly. There is not much improvement in the last 2 months, sir. The government has allocated 1,200 crores for minority welfare under plan. In the current additional allocation of 121 crores have been made. Thus, the total allocation of minority welfare was 1,321, sir. The finance department have issued BRO and made green channel release of rupees 150 crores so far, sir. The total release work out to rupees 1,037 crores, that is 79% of overall allocation. The expenditure so far is 626 crores or 47% of the allocated fund. I am finishing, sir. Minorities pe khatam kar raha hu, sir. Sir, the finance department figures, however, indicate that expenditure of only 600 crores have been incurred so far, sir. सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्च हुए सर माइनॉरिटीज पे, सर। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आई अर्ज Finance Minister Saab and also Chief Minister Saab to consider allocating additional funds of rupees 250 crores for minority welfare over and above the budgetary allocation of rupees 1,250 crores in 2017-18. This will push the total allocation to rupees 1,500 crores, sir.